Hello, Assalamu alaikum. Welcome back, students. In our previous lecture, we ended on the program 10, that was our assignment number 2. Assignment number 3, that was actually the assignment number 3. That was about write a program that reads 4 values from the user and save the first value in A variable, second in B, third in C, and fourth in D. And the value program swap the A and B values and C and D values as the respectively, and according to that given output. So for this I am making the program that will be like this. I'm gonna stop the recording and I will pause the recording. I will write the program and then show it to you. Okay. मैंने ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिख दिया कंपाइलर में. हैश इंक्लूड स्टूडियो, कॉनियो, इंट मेन, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा. इंट ए बी सी डी एंड टेम्प. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई. ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड फॉर 4 वैल्यूज और एक टेम्प वेरिएबल फॉर टेम्पररी वेरिएबल. जिन स्टूडेंट्स ने टेम्प 1 या टेम्प 2 के साथ किया है वो भी ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिंगल एक टेम्प यूज करके बता रहा हूँ. फर्स्ट स्टेटमेंट, एंटर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, उसके लिए स्कैन एफ. तो स्कैन एफ जो है परसेंट डी एंड इम्परसेंट ए, जो कि फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी. देन सेकंड प्रिंट एफ फॉर बी वेरिएबल एंड then second scanf for b variable, third printf for c variable and third scanf for c variable. Same is the case with d variable and scanf d variable. Now temp is equal to a, it means that the value of a will be stored in temp, then a is equal to b. b वेरिएबल की जो वैल्यू है वो a में स्टोर हो जाएगी, a वेरिएबल में, एंड देन b इज इक्वल टू temp. तो temp जो है, temp वेरिएबल की जो वैल्यू, जो a की वैल्यू temp में जा चुकी थी, अब वो b वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. देन अगेन, अब क्योंकि temp का काम उनके साथ खत्म हो गया, a और b स्वैप हो गए, अब उसी temp को हम c वेरिएबल और d वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिंगल temp यूज किया है. जिन स्टूडेंट्स ने temp 1 या temp 2 यूज किया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. So now in this statement, temp is equal to c, so the value of c will be stored in temp. Then c is equal to d, the value of d will be stored in c, and d is equal to temp, the value of temp will be stored in d. Now the final step, we have to display all the values of a, b and c, d. printf the value of a is percent d a, the value of b is percent d. बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा. \n इसलिए यूज किया है कि हर मरतबा न्यू लाइन में डिस्प्ले हो जाए. तो a b c d, द वैल्यू ऑफ a इज परसेंट d और परसेंट d की जगह हम a वेरिएबल लगा देंगे क्योंकि हम a की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं. इसी तरह से b c एंड d के लिए भी यही प्रोसीजर परफॉर्म होगा. जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो द वैल्यू ऑफ a वेरिएबल इज 10, 20, 30, 40 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 20. देखें, b वेरिएबल की वैल्यू तो 20 थी ना, वो अब a में आ चुकी है, और a की वैल्यू जो थी वो 10 थी, वो अब b में आ चुकी है. इसी तरह c और d भी स्वैप हो चुके हैं. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर थर्ड असाइनमेंट. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज making decisions, and in decision making the very most important topic is transfer of control. So we can transfer the control according to our conditions and for that purpose if statements are used. If statement allows conditional execution, it is used to execute a statement or set of statements after testing a condition. So the general syntax of if condition is, we can check the conditions in our program using the reserved word if in curly braces in parentheses we write our desired condition. Conditions are written using the
using the relational operators. For example, if m is less than n, this is also a condition. So in this case, the if condition will check the value of variable m. It either it is less than n or it is equal to n. For equality, we can write m is equal to n. Please remember that single equal to is an assignment operator, whereas for checking the equality we have to use double equal to. And for greater than, we can write it m greater than n. So this is the way we can write our conditions in the if parenthesis. If reserve word, compiler will detect, as soon as the compiler detects if reserve word, it will test the condition. If the condition becomes true, for example, if the value of m is less than n, so it means that the condition is true. So when condition becomes true, the set of statement enclosed in this curly braces are executed. And if the condition is false, let's suppose the value of m is not less than n, whatever the condition is in these parentheses, and if the condition is becomes false, the set of statement in these curly braces will not be executed, they will be ignored, and the compiler control will directly go to the next statement right after this curly braces. So the statement right after this curly braces will be executed. If there is no condition, or no statement, then the program will terminate it. So this is the condition testing in the using the if condition or if statement. Okay, program number 11. Write a program that inputs the marks from user at runtime. If the marks are greater than 40, the program prints an output message that you are pass, and otherwise prints you are fail. So this program will use if conditions. How we can write the program? Let's see. The same hash include studio.h, hash include conio.h, int main, int marks. Because we are accepting marks from the user at runtime, so we will declare a variable with marks. Printf enter your marks. This is an output message. It will accept, it will display this message as it is, that enter your marks. For this purpose, scanf we will use for input, scanf %d, sorry, %d in %marks, because the value will be stored in marks variable. Here our input is done. After getting the marks from the user, we have to check if the marks are greater than 40, so we will use if condition. If parenthesis marks are greater than 40, if marks, now here it is checking the value of marks. If the value of marks is the value of variable marks is greater than 40, so it will display printf you are passed.
here we will close the curly braces, and right after the curly braces, now if the condition is false, marks are not, if the marks are not greater than 40, so we will directly write printf you are failed, because in this case, and here return 0 and all the here our program will be end. Now when the compiler will reach on this if statement, it will check if marks are greater than 40. So let's suppose the user entered 50 marks at runtime. So here the value of marks is greater than 40, so the condition is true. So after, when the condition becomes true, it will execute the set of statements enclosed in the braces. जो ब्रेसेस में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, इन ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर ये लास्ट वाली एग्जीक्यूट, ये लास्ट वाली भी एग्जीक्यूट होगी। इस केस में ये लास्ट वाली भी एग्जीक्यूट होगी, क्यों? क्योंकि इफ़ कंडीशन के फ़ौरन बाद, क्योंकि इफ़ कंडीशन को ये एग्जीक्यूट करने के बाद जो है ये कंपाइलर जो है यहाँ पे आएगा। तो चलें इसको कंपाइलर में हम लोग रन करके देखते हैं। डेव कंपाइलर में इसको रन करते हैं। If marks is greater than 40, printf, oh sorry, p and s will be small, okay. Now save it, compile and run, enter your marks. Let's suppose 41 marks. You are passed and you are failed. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स क्यों एग्जीक्यूट हो रही हैं? क्योंकि जैसे ही इफ़ कंडीशन पे कंपाइलर पहुंच रहा है, वो इफ़ कंडीशन को चेक कर रहा है। इफ़ कंडीशन तो ट्रू हो गई है, इफ़ कंडीशन के ट्रू होने के फ़ौरन बाद वो तो ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको उसने एग्जीक्यूट कर दिया, इन ब्रेसेस के दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट थी उनको एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके फ़ौरन बाद ये प्रिंट एफ पे भी चला गया, जो कि इस ब्रेसेस के फ़ौरन बाद जो भी स्टेटमेंट थी उसके ऊपर भी आएगा ये। लेट्स सपोज अगर हम दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं और अभी हम 39 मार्क्स देते हैं, तो इस केस में ये क्या करेगा, 39 मार्क्स जो हैं ये सिर्फ फील्ड शो कर रहा है। तो लेस देन के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ग्रेटर देन के लिए ये परफेक्टली काम नहीं कर रहा। वजह ये है, लेस देन के लिए क्योंकि 39 मार्क्स एंटर किए, उसने देखा कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी जो कि इफ़ कंडीशन की ब्रेसेस के अंदर थी उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, और डायरेक्टली जो है इस स्टेटमेंट पे आ गया, तो यू आर फेल्ड इसने डिस्प्ले कर दिया। लेकिन ग्रेटर देन के लिए ये दोनों को, इसको भी आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है और इसको भी आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है। अब हम चाहते ये हैं कि हमें एक एल्स पोर्शन चाहिए, इफ और एल्स, तो उसके लिए एल्स एक रिजर्व वर्ड है, तो एल्स के लिए हम लोग उस एल्स की ब्रेसेस भी लगा लेते हैं। ये एल्स की ब्रेसेस हो गए, कर्ली ब्रेसेस। ये एल्स की ब्रेसेस हो गई, इसको हम नीचे क्लोज कर देंगे इस ब्रेसेस को।
और उसके नीचे ये लास्ट वाली जो है ये तो मेन की करली ब्रेसेस है, तो ये मेन की करली ब्रेसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास, अब हम इसको चेक करते हैं एल्स का केस। अब इसमें ये होगा कि इफ, अगर तो मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर हैं तो फिर सिर्फ ये पोर्शन इसका एग्जीक्यूट करेगा, एल्स के पोर्शन को इग्नोर कर देगा और उसके बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो कि रिटर्न 0 होगी। ठीक है, रिटर्न 0 को ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मार्क्स जो हैं वो लेस हैं, तो फिर ये एल्स वाली पोर्शन को बगैर टेस्ट किए जो भी उसमें स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गई? दो चीजें याद रखें, अगर कंडीशन इफ की ट्रू हो जाती है, इट मींस के इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू है, ट्रू मींस के सेटिस्फाई कर रही है, मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं, तो फिर ये इफ की फौरन बाद जो कि इफ के ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स को इग्नोर कर देगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ के ब्रेसेस को, इफ की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देगा और एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। एंटर योर मार्क्स, पहली मरतबा हमने 41 लिए, यू आर पास्ड, उसने यू आर फेल्ड वाला एल्स वाला पोर्शन जो है क्या किया, इग्नोर कर दिया। दोबारा चेक करते हैं, इस मरतबा हम लेस देते हैं, 12 मार्क्स, यू आर फेल्ड, उसने क्या किया, इफ के बाद वाली जो पोर्शंस हैं उनको इग्नोर कर दिया और एल्स को एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो देखिए कंट्रोल को हम कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, इफ के पोर्शन को हमने इग्नोर करवा दिया और डायरेक्टली कंट्रोल को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। और अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स का पोर्शन जो है वो इग्नोर हो जाएगा और ट्रांसफर डायरेक्टली रिटर्न पे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। I think I have made myself clear. Inshallah, in the next program, uh, that will be a little more, bit more complex program. So you will get the idea of if conditions more clear.